When you have a bacterial infection, antibiotics, if you take it, it kills the bacteria and your infection gets under control faster and it will not progress to a more severe disease. See, if you take the antibiotic on your own, every infection is not caused by bacteria. कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स आर नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट दैट, वो इफेक्ट नहीं होंगे उनका. और दूसरा ये कि इफ़ यू टेक द रॉन्ग एंटीबायोटिक it will be ineffective. And multiple studies have shown that if there is a delay in appropriate therapy, the disease, infection और खराब हो जाएगा and it can progress to organ failure, kidney failure and ultimately death. So it can harm you and it can unnecessarily delay the therapy, correct therapy. अगर आप अपने आप ही एंटीबायोटिक ले रहे हैं, you go to the chemist, many times you say भैया मुझे ये गला खराब है, कौन सा एंटीबायोटिक लेने हैं, and chemist will prescribe. Chemist डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैज़ टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन. सो अगर इफ यू टेक इनअप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, यू कैन हैव अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. दैट मीन्स यू कैन गेट डायरिया, यू कैन गेट रैश, एंड इन सम केसेस इट कैन बी क्वाइट सीरियस एंड फेटल. आपकी डेथ हो सकती है अगर आप गलत एंटीबायोटिक लो और साइड इफेक्ट्स वगैरह हो गए. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स आर मेडिकेशंस. नाउ इफ यू आर ऑन अदर मेडिसिन, देयर विल बी इंटरेक्शन विद अदर मेडिसिन. वो दवाइयों के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे और या तो आपकी वो दवाइयों का इफेक्ट कम हो जाएगा या एंटीबायोटिक का इफेक्ट कम हो जाएगा. इसलिए या दवाइयाँ आपकी नहीं काम करेगी या एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा. सेम थिंग विल इफ यू पॉप द पिल्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीबायोटिक्स. व्हाट विल बी द इफेक्ट? फर्स्ट, इट मे नॉट रिक्वायर एंटीबायोटिक्स. दैट मीन्स यू आर टेकिंग अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स विच कैन हार्म यू एंड ऑब्वियसली योर कॉस्ट विल, अननेसेसरी एक्सपेंसेस विल हैपन. दैट मीन्स अगर वायरल थ्रोट इन्फेक्शन है, antibiotics are not going to be effective. You are unnecessarily taking antibiotics. Secondly, you will have side effects of antibiotics. Every medication has a side effects. So you will be suffering unnecessarily from side effects. और तीसरा effect ये है कि there are certain resistant organisms. Some bacteria are resistant to that antibiotic. Suppose the antibiotic which you are taking, it is not effective for those bacteria. Then what will happen? The bacteria which are sensitive will die and the bacteria which are resistant will grow in numbers. That means the dangerous bacteria will grow and your disease, आपकी बीमारी और खराब हो जाएगी and seriousness can get worse and you may have to be hospitalized in hospital or in intensive care unit. So the disease can progress if you pop the pills yourself. Primarily we are talking about antibiotics, but any pills can have side effects and can have issues. But this is I already talked about. And one other dangerous thing about this popping pills, of buying from chemists and taking the pills, is that in your environment, in your house, in your water source, the bad bacteria will grow. That means if you get infection next time, or if your family member or neighbor gets infection, it will get worse. Particularly India में इतना misuse हो रहा है antibiotics का, उसकी वजह से public source of water and sewage may we have found resistant bacteria which were only seen in hospitals earlier. Now you are seeing it outside in the community. So we are killing environment and we are harming ourselves. Most of the antibiotics can produce bone marrow suppression. Bone marrow वो होती है आपके bone की जो अंदर का part होता है जिससे आपके cells बनते हैं. White cells to fight your infection, red cells to carry oxygen in the blood जिसकी वजह से blood red होता है, एंड प्लेटलेट्स जिसकी वजह से क्लॉटिंग होता है ब्रेन का. आजकल डेंगू चल रहा है, यू आर सीइंग पीपल आर कमिंग विद लेस प्लेटलेट्स. तो इफ योर प्लेटलेट्स आर ऑलरेडी लेस, यू विल ब्लीड मोर. ऑल्सो इफ योर वाइट सेल्स गो डाउन बिकॉज ऑफ बोन मैरो सप्रेशन, बिकॉज ऑफ अननेसेसरी एंटीबायोटिक, देन योर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइटिंग इन्फेक्शन, ओन रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी गोज डाउन. तो आपका रेजिस्टेंस डाउन हो गया, इसका मतलब बार बार आपको इन्फेक्शन होगा और सीरियस इन्फेक्शन होगा. थर्ड थिंग इज your hemoglobin, red blood cells are not produced, so you can become anemic and you will feel weak. Also your resistance will go down because of that. So every antibiotic has side effects and it's an interaction with other drugs, so please do not take it yourself. Treatment of infection, you take antibiotic under supervision after a doctor has seen you and prescribed it. And treatment of the side effects, so many times we stop the antibiotics, but many times it requires even more advanced therapies which require a higher center to treat.
Keep in mind that every symptom is not because of infection. Also keep in mind that every infection is not because of bacteria. And if you have infection and you're not getting better in 1 or 2 days time just by taking crocin, please consult a doctor who can examine you and who can prescribe the correct antibiotics in the correct dosages. There is no antibiotic which you should take over the counter. I would advise only 2 drugs which you can take over the counter. One is crocin, which will bring your fever down, which is quite harmless if taken in not for very long time. Second is vitamins, which you can take without any major side effects. But do not take antibiotics over the counter. Chemist is not a doctor.